Netas came calling. People on the ground kept digging. Families braced themselves as hope for survival started waning. Wayanad remained in headlines, mourning, blame gaming. While rescue operations continued for the third day. In the north, a red alert over the national capital saw the schools and colleges enjoying a rainy day leave without a drop of rain. But the evening before, it rained so much that even the new parliament building witnessed a water leak. In Himachal Pradesh, 2 separate incidents of cloudburst caused deaths and more than 50 people missing. In Uttarakhand, 9 people died in flash flood triggered by cloudburst. North to south, India raised red flag against monsoon fury. Like every other year, the Parliament tabled the disaster management bill to tackle another monsoon, another May. 3 days have passed by since 2 huge landslides hit Wayanad. The death toll has crossed 250. Hope of any more survivors is fading fast. This ridge that you see here, and I'm going to come a bit this side and show you what's happening here. This entire stretch completely destroyed because of the landslide. What people tell me is that it was just about 4 meters versus now it's become this big. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് പിന്നെ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മൊബൈലിന്റെ പ്രത്യേകം ടവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊബൈലിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അല്ലാത്ത ഫോഴ്സിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. മേലിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നത്. I don't know if you can see it right at the very end there. We can zoom in the very end between the trees. There's a broken house. Those were Adivasi settlements, now destroyed. But what they tell me is that the Adivasis got away. None of them were harmed, and here's why. I'll tell you why. Avade Adivasi settlement undayirunnu. Avade first hit aayi landslide. മേലിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വന്നതാണ്. പക്ഷേ അവിടെ casualties അവിടെ നിന്ന് മാറിയിരുന്നു. ആളുകൾ മാറിയിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ആളുകളെല്ലാം മാറിയിരുന്നു. ഈ കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നദി ഒഴുകി പോകുന്ന ഇതുവഴിയാണ് നദി ഒഴുകി പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ 4 മീറ്റർ വീതിയുള്ള നദിയായിരുന്നു. ആ നദി ഒഴുകി പോകുന്നത് 4 മീറ്റർ. So it was 4 meters. അപ്പൊ അത് നദി ഒഴുകി പോകേണ്ടതാണ്. Warning ഉണ്ടായിരുന്നോ? വാണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് വാർണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് വാർണിംഗ് ഉള്ള ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ സാധ്യത കുറവായിരുന്നു. 4 മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള നദിയുടെ സൈഡിലെ വീടുകളുണ്ടാവും. ആ വീടുകളുണ്ട്. ആ വീടുകളിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ 4 മീറ്റർ വീതിയുള്ളത് 100 മീറ്റർ ആയപ്പോൾ അത്രയും ഫുള്ള് പോയി. This old woman still hopes to find her 9-year-old granddaughter. She has been raising her since the child was 2 months old. எவ்வளவு வயசு அந்த பொண்ணுக்கு? 9 வயசு சார். இந்த டிசம்பர் வந்தத 10 தொடங்கி 9 வயசு. நாங்க சங்கடத்துல முங்கி கழிச்சிட்டு கிடக்குறோம் சார். சாப்பாடு கொடுக்குறாங்கல்ல செய்யறாங்க. நம்மளுக்கு அந்த புள்ளை பார்க்க எப்படா பாக்குறேன்னு எல்லா சவத்தையும் போய் திறந்து பாக்குறோம். என்ன செய்யறது? அழகான உள்ள அழகான குழந்தை. என்ன அவங்க அம்மாளியா இருந்துட்டு நான் தான் சாரே குழந்தையில இருந்து பாத்துட்டு இருந்தேன். 2 மாசமா தேடி கொண்டு போயது பிள்ளையா கொண்டு வந்தாங்க. From Meppadi to Mundakkai to Chudalmala, one long stretch of houses, shops, plantations and people lay buried under tons and tons of mud, in which this family has lost 7 members. 6 பேர் மிஸ்ஸிங் ஆயிருந்தாங்க. அதில் ஒரு 9 வயசு பாப்பா, പിന്നെ மாமனார் மாமியா, மச்சானோட ஒய்ஃபு 8 வயசு குழந்தை. இப்போ மச்சானோட ஒய்ஃபு 8 வயசு குழந்தை கிடச்சிருக்கு.
மூணு பேர் நீங்க கிடைச்சாங்கன்னு சொன்னாங்களே, அவங்க உயிரோட இருந்தாங்களா இல்ல இருக்குன்னு ஒன்றும் தெரியலைங்க சார். இல்ல கிடைச்சாங்கன்னு சொன்னாங்களே மூணு பேர் நீங்க? 3 பேர் இல்லைங்க, அவர் டெத்து தான். டெத்து. Like him, the survivors know there is a long battle ahead as their loved ones won't come back, though they have. Hilly area, it's still very risky, and they have been working on the ground without any break since the last 2 days carrying out these rescue operations. So safety of these rescue operators and everybody at this place is very important also. That's why there's a small halt right now for hoping that the climate will turn favorable with time, but right now it's raining heavily and making it very, very difficult to carry out the rescue operations. The rescue operation continues to search for any life that still could possibly be brought back, but mostly to bring out mortal remains for the surviving family members to mourn. A temporary Bailey Bridge in Chudalmala, constructed by the Army's Engineer Task Force, will allow the flow of heavy vehicles to landslide hit areas and speed up rescue. The construction work of the Bailey Bridge is still going on here. In fact, once this is done, ambulances and all the equipments can, start moving is what the rescue operators here are hoping, because on the other side is where around, many families, many houses were lost. So there are still people stuck there. So once this is ready, once the bridge is completed, then today the number of people, the number of bodies recovered would be really high, is what we're understanding. SCOC के अनुसार जो हमें सूचना मिली है, तकरीबन 200 डेड बॉडीज़ रिकवर की जा चुकी हैं और अभी कार्रवाई चल रही है। क्षेत्र बहुत बड़ा है, तकरीबन 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और इसमें फैलाव काफ़ी है। जो ब्रिज जिसमें लैंडस्लाइड में टूट गया था, उसके वजह से कार्य जो है वो बाधित था। अभी ये कार्रवाई हो रही है। Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan chaired an all-party meet in Wayanad. He urged the centre to declare the landslides a national disaster. നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു മഹാദുരന്തമാണ് സംഭവിച്ചത്. ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൊതുവിൽ ഇത്തരമൊരു ദുരന്തമുഖത്ത് നടത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തി എന്നൊരു സംതൃപ്തിയാണ് ആളുകൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും അതേ രീതിയിൽ തുറന്ന് ഏകോപിതമായി പ്രവർത്തനം നടത്തി പോകണം. As Samaritans strive ahead inch by inch in mud, water and rain in Wayanad district of Kerala, the Met Department predicted more rain not only in this particular region but in the north of the country as well. अभी मानसून एक्टिव कंडीशन में है और अगले 3-4 दिन की बात करें, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक्टिव मानसून कंडीशन रहेगा। नॉर्मल से वो नॉर्मल रेनफॉल होगा और स्पेसिफिक मेट्रोपॉलिटन सब डिविजन डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैवी टू एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल हो सकता है। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसका रीजन यही है कि वेस्टर्न एंड ऑफ मानसून ट्रॉफ नॉर्थ वर्ड शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से हिल एरिया में रेनफॉल बढ़ रहा है। Nearly 3,000 kilometers from Wayanad in the hills of Himachal Pradesh, in 2 separate cloudbursts, 2 people died and nearly 50 are missing in 3 districts of Shimla, Kullu and Mandi. The cloudburst hit road connectivity in Shimla's Rampur. Manali has lost connectivity. This is Byas River, which is threatening again. It has damaged some highways going to Manali and some other national highway roads too. So last year also, Himachal Pradesh witnessed devastation, and you can see the Byas River flowing in a threatening manner, and that historic temple, which last year also had faced some damage. So this time also, since last night, the cloudburst incident took place. The Chief Minister has geared up and he's taken meetings, and the NDRF, the SDRF, all have been put on job. In the neighbouring state of Uttarakhand, 9 people have been reported dead after cloudburst triggered flash floods. Nearly 200 pilgrims on the Kedarnath Yatra route got stranded with the rain washing away a part of their trail. मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया, भूस्खलन काफी हुआ है,
लेकिन मार्ग बनाने की कार्रवाई जल्दी जल्दी की जा रही है, जो काम चल रहा है और जो लोग वहाँ पर दर्शन के लिए गए हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। A few hours of rain on 31st July evening and the capital city was underwater. So much so that a 23-year-old mother and her 3-year-old son drowned in an open and overflowing drain in Delhi's Ghazipur. पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे नाले खोल के रखे। आज मेरे बच्चे वाइफ गए, कल कोई और जाएगा। पहले ये चीज ठीक कराओ। आज मेरे गए, कल किसी और के जाएंगे। मैं तो बचा नहीं पाया। मैंने पुलिस को भी 2 घंटे से फोन कर रहा हूँ, कोई नहीं पहुंचा वहाँ। The torrential rain also caused water to leak into the lobby of the newly inaugurated Parliament building. None of these are any anomaly for an Indian monsoon. Every year, the country battles with rain fury. In 2018, across the country, there were 500 floods and 404 landslides, causing damages to crops, houses and public utilities of nearly 22,000 crore rupees. 948 floods and 264 landslides in 2019 caused damage worth nearly 16,000 crore rupees. In the pandemic-induced lockdown year of 2020, India witnessed 959 floods and 295 landslides that caused damage of little over 21,000 crore rupees. In the following year, 656 floods and 380 landslides cost India nearly 50,000 crore rupees. In our report, we are saying that in the highly sensitive area, not the middle sensitivity or low sensitivity. In the highly sensitive area, further quarrying, further mining, etc. should be completely stopped. The lush green forest cover on these mountains can't hide the cracks. Rampant chalk mining in Kanda area of Bageshwar in Uttarakhand is a ticking time bomb. Kanda is 250 km from Pauri, which witnessed heavy rain due to cloudburst on 1st August. Bachchi Singh, Nagarkoti's father, built this house on the mountain top right under which the mining is happening. His house has developed cracks. मशीनें 2010-12 से स्टार्ट हो गई थी। पहले भी लगी थी, उसमें मना किया। पिताजी उस टाइम जिंदे थे, अभी तो गुजर गए। उस टाइम पिताजी ने मना भी किया था, लेकिन कौन मानता है। बच्चों ने फेसबुक में पता नहीं क्या डाला है, वो करके लड़के बच्चों ने उसके दौरान वो मिट्टी ऊपर को डाल रखी इन्होंने भी। Standing on the roof, I can feel the tilt in this house. Cracks have appeared on the roof, on the ground. All this is happening because of rampant mining. When the mining of talc started, this area prospered, but these people are now facing the consequences. The mining is still going on, and many houses, temples, roads, in fact, the entire ridge of mountains have appeared cracks. These poor people have no place to go, and the government is turning a blind eye to them. The 1,000-year-old Kalika temple of the village too is threatened as cracks have appeared along its foundation and walls. The chalk mine is 50 meters from the temple. दीवार थोड़े पीछे वाला बैठने लग गया है, उसकी वजह से दीवार टाइल भी टूटने लग रहे हैं और जगह जगह पर दरारें, ये टाइल टूटी हुई दिखाई दे रहे हैं। तो यही हमने शासन प्रशासन से बार बार कहते थक गए कि भैया यहाँ ऐसी बातें ऐसे नहीं है, देखने वाले आने वाले करे हम ठीक करेंगे, दीवार देंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जनता को गुमराह करते रहे, लेकिन आज तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया। These cracks can't be fixed as they keep growing with passing time. कितना ही लात मारो इसमें वो मारो, ये जमा हुआ है।
Hemchandra Kantpal, living in this dilapidated house, wants relocation to avoid a fate of getting buried under it in heavy rain or landslide. ये सर खड़िया खनन से आई हुई हैं। 2002 तक तो यहाँ पे जो था मैनुअली काम होता था। 2002-03 के बाद जब मशीनें आने लगी तो अंधाधुंध खनन 2-3 परमिशन न होने के बाद भी बड़ी अच्छी कोठी हवेली टाइप की थी हमारे पहाड़ों की जो होती है। लेकिन सर ये 2009 में गिर गया और गिरा भी ऐसे टाइम में, न बरसात थी, बढ़िया मौसम में गिरा, क्यों जमीन कच्ची हो गई तो लोड ज़्यादा था तो मकान गिर गया। मुझे प्रशासन से एक पैसा भी नहीं मिला उस टाइम। शासन प्रशासन के पास हम जाते हैं तो ये लोग हमको उल्टा सीधा करके भगा देते। A similar situation would cause Kanda to be washed away without a trace. And then there would be a case of another monsoon, another mayhem in the region. चलो 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 ठीक है।